The UPSC CSE arena is an ever-evolving space where staying up to date becomes as crucial as maintaining a thorough preparation. With strategic planning and holistic coverage for exam syllabus, Vision IAS Delhi presents GS Foundation course. Avail analysis and integration of current affairs with GS syllabus. All India test series with an innovative assessment system, inculcating post-test analysis, discussion, all India ranking, and more. Explore the holistic learning modules intrinsically designed for the ideal aspirant. Good afternoon, everyone. So here we are for an open session regarding GS Paper 2, Polity, right? Polity and Constitution. And I'm Dr. Shruti Joshi, and I shall be enlightening you as much as I can regarding how to approach this particular section in GS Paper 2. Okay? And let me tell you, this is one of the section which actually creates lots of worry and issue among the students. And the reason is that how much simple this entire topic appears to be. It is equally complex also. So it's simple also, it's complex also. And this is the reason it becomes really difficult for the student to understand that how should we approach and what should be the trend. Okay? So in today's open session, I shall be discussing, first of all, very basic regarding what exactly do you mean by the term polity, and then slowly and steadily taking forward few of the questions which have been asked in the previous years, we shall be continuing the session, right? So now the first thing which I believe all of you must understand is that what exactly is polity. है ना? Syllabus में it is written Indian Polity and Constitution, GS Paper 2. What is polity? पहले तो ये समझना जरूरी है. And for that, what we need to understand, there are certain synonymous, or you can say interlinked terms like civics, like politics, like political science, and somewhere in between lies this idea of polity. So most of us actually unconsciously, because we don't have that much of idea that there is a distinction in all these terms. Okay? How many of you are there from optional PSIR? Okay, so this is a reason I have included political science also, so that we are able to get a holistic idea. Okay? Now first is the word civics. You see, polity, as I said, it's very simple also, yet complex, because it's part of our socialization. है ना? Ideas regarding polity, many of them are part of our socialization. When I say this, this means that actually we have grown up understanding many of the things, because what all we listen in television, what all we read in the newspaper regarding the political system, consciously, unconsciously, it is developing that idea. इसीलिए अगर सही approach मिले तो approach to polity
as far as UPSC is concerned, is going to be very easy, right? ठीक है? अब when I'm saying it's part of our socialization process, this means we have read about some aspects of polity even in our foundation days of schooling. और वहां पर इस आइडिया को हम सिविक्स बोलते थे, है ना? आप लोग पॉलिटी के नाम से नहीं पढ़ते थे. We used to study within social sciences, SST, and within that there was this idea of civics. तो now we understand, हम लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि civics is all about polity, but no. So civics is not all about polity. So what is civics? Civics is a study of rights and duties of citizen. This is the reason, isn't it very natural कि क्यों हमको सबसे पहले civics introduce कराया गया in our curriculum, है ना? Since standard, I believe 5th से शुरू हो जाता है civics का idea, right? So why this idea is being grown up? Reason because civics includes study of rights and duties of citizen. So it becomes very important for us to at least have an idea that as citizen of India, what are our rights? And as far as state is concerned, what are our duties? Okay? So that we are at the same time very vigilant about our rights, and at the same time we are highly responsible about our duties. इसीलिए civics पढ़ाई थी. So civics is not exactly polity, right? Second term comes up very often, politics. So politics को समझना है तो समझो politics is an activity. It is verb. एक noun होता है, verb होता है, adjective होता है. तो noun की activity is verb. So politics actually is all about activity. क्या लिखा है? Activities associated with governance of a country or area, especially the debate among individual or party hoping to achieve power. So politics is all about struggle in one sense as far as power is concerned. Politics is all about a process or an activity to influence the government. So we are also part of politics in the sense we are giving our vote. And the electors, that is the legislators or the leaders, they are also part of politics because anyhow they are part of this struggle of power. इसको कहते हैं politics. ठीक है? तो politics is also not entirely polity. It is part of polity. Clear? Third is a larger idea of political science. This is the reason I was asking who all are from optional. So optional हमारा subject होता है PSIR, Political Science and International Relations. And I'm very glad to announce that Vision IS has also started PSIR optional, right? And we have already started the classes. So those who are interested are very, very welcome to join us. I shall be taking the initial classes. Okay. So now PSIR it includes two ideas, political science and international relations. अब international relation is regarding the activities among the nation state at global level. ठीक है? So this includes idea of conflict and cooperation among nations at international level. Clear? And this section of political science basically includes the conflict, again the same, conflict and cooperation among actors at domestic level. ठीक है? तो PSIR ऑप्शनल आप देखो बड़े बहुत ही क्लीन तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है 4 सेक्शंस में, है ना? First is what? Theory and philosophy plus thought, both Western and Indian. Second is what? IGP, Indian government and politics. Third is what? Comparative politics and IR theory.
and fourth is what? India and the world. ये दोनों है paper 2, these is paper 1. तो political science क्या है फिर? Political science is a academic study. It is an academic study involving issues of conflict and cooperation. At domestic level, this issue will include individual and the state or different state organs. जब हम ये स्टडी करेंगे तो this will come under IGP. And at international level also it includes conflict and cooperation among nation state, और वो आ जाएगा India and the world में. और इसी को थ्योरी में पढ़ोगे तो that will come into political theory and thought. So political science क्या है? It is a larger academic discipline. ठीक है, इतना क्लियर हुए. Now once we know that polity is different from all these ideas, then what exactly is polity? जो हमारे syllabus में दिखती है. So now polity means a form or a process of civil government. Government की process is called polity. And of course, when I say government process, it means the activity of the government, and it also means how government is formed. है ना? Process of government का मतलब क्या है? Process of government formation and process of government policy making. यही तो होगा ना? गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले तो समझेंगे कि गवर्नमेंट आई कैसे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, और अब काम कैसे कर रही है, व्हाट इज द पॉलिसी मेकिंग. जहां गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होगी, वी एज सिटीजन्स वुड बी टेकन अप. एंड वेन एवर गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग की बात होगी, द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, all constitutional bodies, all statutory bodies, everything would be included. और एक्चुअली सिलेबस में यही तो है. सिलेबस इज डीलिंग, अब जैसे ही मैं सिटीजन की बात करूंगी, सिटीजन इंक्लूड्स आइडिया ऑफ FR प्लस FD, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी. यही तो है हमारे कोर्स में. एंड रेस्ट एवरीथिंग विच इज कवर्ड इज इंक्लूडिंग दिस आइडिया ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग. Be it separation of power, be it legislature, executive, judiciary, federalism, parliamentary form of government, local bodies or urban local bodies or rural local bodies, सब क्या है? सब policy making कर रही हैं. Clear? So polity is what? It is a process. So polity के अंदर you can say politics happen. उसी process के दौरान जब elections हो रहे हैं तो politics हो रही है, which is an activity. And a process, the entire enduring, never-ending process is called polity. इसीलिए syllabus में आपके polity है, not politics. And since this is just general studies, in which we are assuming that a generalist idea needs to be given, this is the reason इसको PSIR भी नहीं बोला या political science भी नहीं बोला. But somehow the same idea is applicable for those who have opted for PSIR. वो उसको अलग से पढ़ेंगे within the larger academic discipline. ठीक है? It is a term that encompasses the way a society is organized and governed. So government formation, including the distribution of power and authority among its members. Indian polity refers to the system of government and political framework in India. जब हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तब हम पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिटी. हम कहते हैं वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस. ठीक है? सो दिस इज द रीजन, दिस इज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. इंडियन पॉलिटी इज डेमोक्रेटिक, फेडरल इन स्ट्रक्चर, characterized by system of governance that distribute power between central and its constituent states. So the idea of federalism is there. ठीक है? And you see, this is the reason I told you कि detailed या minute study के पहले ही you people have an idea what exactly is the political system.
For instance, I am very sure that words like federalism, words like parliamentary form of government कभी तो पढ़ा है, सुना है एटलीस्ट आप लोगों ने, सुना है ना सबने. It's not Greek and Latin. कोई एलियन सा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ये. This makes polity very very approachable idea. इसीलिए सबसे ज्यादा students are afraid of this section. But I always tell students that this is something जो बहुत easily you can understand because one kind of vague idea is already there in your mind. मैं आपसे कहूँ political party system कैसा है इंडिया का, क्या बोलोगे? मल्टी पार्टी सिस्टम. देखो अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, बट यू ऑल नो इट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑफ आवर कंट्री? Sovereignty lies in the people, and where we are deriving this power, it is from constitution. क्योंकि constitution में लिख दिया है that we all are sovereign, है ना. तो ये सारे जो basic ideas है ना, ये आपको पता भी नहीं है, but you know these ideas. So basically I always encourage students saying that you don't know what you know, and since you don't know what you know, this is the reason this anxiety comes up कि ये वाला तो बहुत ही टफ टॉपिक होगा. नहीं है ये टफ, ठीक है, ये इजी है, ये अप्रोचेबल है. बस थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी हम लोग क्लासेस में करेंगे. नाउ व्हाई द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जाम. यू सी, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट कि ये जो यूपीएससी की, शायद इंडिया इज अमंग फ्यू ऑफ द कंट्रीज इन विच द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इज, before it becomes formal training, ek informal idea and training happens during the preparation of this service. So India is one of the few countries who take forward the UPSC journey, and what all things we have included for you people to study, this is a part of your training. So training ke pehle ki training process hai ye. So why Indian polity is being included? Simple idea hai, after you get selected, you are going to take forward either important some areas, districts in states, अगर direct निकलते हो या high ranks में हैं, and if in the allied services you would be getting some important portfolios to serve. Anyhow, your responsibility is going to be very very important. So definitely UPSC does not want its officials to be dependent on someone else for even basic idea. कि डीएम साहब को यही नहीं पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का व्हाट इज द फेडरल आइडिया, मेरे डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या हो सकता है. ही हैज नो क्लू अबाउट लोकल गवर्नमेंट, तो कैसे चलेगा काम? दिस इज द रीजन फेडरलिज्म इज बीन इंक्लूडेड. यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद द सेंटर. दिस इज द रीजन सेंटर स्टेट रिलेशन इज बीन प्रोवाइडेड. You have to take forward the finance very seriously. This is the reason fiscal federalism का idea आपको दिया जाता है, ठीक है. So this is the reason UPSC में each and every topic, चाहे आप geography पढ़ो वो भी बहुत जरूरी है. ऐसा थोड़ी है कि district magistrate is sitting and he is just looking at the soil की लग तो black रही है, इस पे क्या हो सकता है? अरे आपको पता होना चाहिए this is black soil. So what you should do or what kind of things needs to be grown there? Suppose you have become a diplomat, IFS service adopt करे, और डिप्लोमैट को पता ही नहीं है कि what is India's neighborhood first policy. वो अपने डेप्यूटीज से पूछ रहे हैं, पहली दफे नाम सुन रहे हैं हम, नहीं तो हमने आपको IR में बता दिया कि सी दिस इज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. IOR में डील करना तो सागर इनिशिएटिव देखना है. So this basic idea needs to be given before you ultimately take forward important fronts. This makes each and every discipline which is being taught in UPSC extremely important. इसीलिए dear students, अभी आप लोगों की जर्नी शुरू हुई है. Don't take any of the discipline in a very strange and alienated way. ये मत सोचो कि सिर्फ काम के लिए हम पढ़ रहे हैं, or just because I have to pass this exam. No, this is going to help you a lot when you are ultimately taking forward the charge. अगर उस आइडिया से पढ़ोगे तो you would feel involved into the study. फिर सुपरफिशियल स्टडी होगी नहीं तो you will not feel alienated. तो आपकी पूरी यूपीएससी जर्नी would be very very joyful. Yes, strenuous, stressful तो है क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है. बस उस स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेस तो हर लाइफ में, पार्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू विल हैव स्ट्रेस, लेकिन ये स्ट्रेस इज वर्थ टेकिंग,
ठीक है, चलो. सो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज, द एस्पिरेंट शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. आप भी आगे चलकर इसी पे डिपेंड रहेंगे. यू आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Understanding the governance framework, you are going to be part of the governance. Bureaucracy is the steel frame of the governance. ठीक है? So you need to understand what is the relationship between the government and the governance or the bureaucracy. Policy formulation and implementation. Anyhow, you are going to take part into policy formulation. Policy formulation is basically, देखो, policy formulation technically is a part of legislature. Legislature means the MPs or MLAs. ठीक है? Member of Parliament and Member of Legislative Assembly. वो ही जाते हैं, हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में जाके लॉ बना रहे हैं. But many times it happened, which is called delegated legislature, जब because of the paucity of time, they just provide the nitty-gritties or the skeleton of a particular law और कह देते हैं subordinate से कि इसके ऊपर fill in the blank कर देना. वो subordinate या who is that steel frame? The bureaucracy is the steel frame. ठीक है? तो उसके लिए पता तो होना पड़ेगा ना, what is the constitution, how governance happen. So this is delegated legislation, so you can be part of policy formulation in that ways, but definitely for sure you are going to be part of implementation anyhow, because implementation is part of executive. ठीक है? अब executive दो टाइप की होती हैं. अभी हल्का हल्का आइडिया ले लो, डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे. Executive is of two kinds. One is called political executive, another is called non-political executive. Political executive means the leaders, the representatives whom we choose, है ना? The government. So Prime Minister plus COM. This is the political executive. अब बताओ, PM and COM, are they permanent or are they temporary? They are at least not permanent. ठीक है? So this is not non-permanent. So this kind of executive which is political is non-permanent. Now non-political executive is the bureaucracy or the civil servants. Or our dear would be student. The students would be the next civil servant जो अभी हमारे सामने बैठे हैं. So you people are going to be the future civil servant. You people will be completely non-political. कोई बैगेज लेके नहीं आए हो क्योंकि आप इलेक्शन लड़के नहीं पहुंचे हो. You have written a service, a very objective ideas you have put in your answer. So you are completely non-political. But you are permanent. जितना एग्जाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है, उतना ही इस सर्विस से बाहर निकालना डिफिकल्ट है. So you are going to be the permanent non-political executive. So this is permanent. So now, leaders can come and go, but you people will remain there. And this is the reason the entire idea of implementation rests on you only. So don't you think, therefore, constitution study आपके लिए ज़्यादा important है? Because you are going to be the permanent executives who are going to help the political leaders for policy implementation and also for policy advice and formulation. This makes study of polity very, very important during the preparation of civils. Clear? Role in democracy. Understanding the political system, including electoral processes and functionings of different arms of the government, prepares the candidate to contribute positively to the democratic process. So if you are into, suppose, a post of a district magistrate, the entire responsibility of conducting free and fair election rests upon your shoulders, at least at that regional level. तो जब तक पता ही नहीं है कि मेरा इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हाउ वुड यू टेक फॉरवर्ड द आइडिया? तो एक बेसिक आइडिया समझना जरूरी है, right? This makes the study of polity extremely important for
the upcoming civil servants. इतना clear है? Any issue? ठीक है. Now next, once we have floated this idea, saying that why polity, what is polity first of all, how it is different from other similar terms, and then how you are going to make it important later on once you get into the services. Now we need to understand what exactly is the exam pattern and the syllabus of polity. या सिंपल शब्दों में कहें तो हाउ पॉलिटी इज इंक्लूडेड इन योर यूपीएससी सिलेबस. सो वी ऑल नो दैट यूपीएससी में देर आर 3 stages. One is prelims, one is mains, and then is your personality test. ठीक है, इसको इंटरव्यू मत कहें, इसको पर्सनालिटी टेस्ट करें. इट्स नॉट एन इंटरव्यू. इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हैं. They are just creating a kind of interaction with you. Knowledge has already been tested through prelims and mains. This is the reason during personality test, they are just evaluating your personality, your temperament. Are you suited to take forward this stressful job or not? तो कितने temperamentally आप fit हो, ये personality test में देखा जाता है. So definitely it's not an interview. 1-to-1 कोई question नहीं पूछेगा कि back to back questions हो रहे हैं. नहीं. It's a very, very nice, good formal setting which gives scope and air for your personality to boom. और अगर इसी spirit से personality test में जाओगे, बिल्कुल true spirit से, you are going to get some very nice marks. But उसके लिए you have to know about everything which has happened for last 1 year. Most of the questions for the personality test also comes either from international event or from domestic event. International event आप international relations में पढ़ लेंगे और domestic events आप polity में पढ़ोगे. This makes polity again very important. ठीक है? अब polity को technically लिखा है in the syllabus of prelims and mains. क्योंकि personality test का तो कोई syllabus लिखा ही नहीं है. और हो भी नहीं सकता. How can you say these are the criterias on which I would be judging your personality? What if I say I have some other criterias? Kindly judge me on some other criteria. This is the reason कोई syllabus नहीं है. अब prelims और mains में polity how it is situated. So in prelims notification में what it is written. Indian polity and governance. This is written. Constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issue, etc. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सेट्रा है, क्योंकि एक्सेट्रा ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी. सो एवरीथिंग अंडर सन इज देयरफॉर कमिंग अप which is going to create a very important role in policy formulation and constitution. ठीक है? So now, अगर हम इन सब को भी decode करें, constitution means what are the various provisions of constitution, what is the history of constitution. इसी में से questions आते हैं mostly, है ना? हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आ जाएंगे. हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीन क्रिएटेड, व्हाट वाज द सेवरल मिशन, जैसे कैबिनेट मिशन पे क्वेश्चन आएगा. और आफ्टर दैट ऑल्सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केप्ट ऑन कमिंग अप, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एंड ऑल, प्रीएम्बल फॉर्मेशन और द प्रोविजन, व्हाट आर द प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटिकल सिस्टम, सो पॉलिटिकल पार्टी पे क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चंस कैन कम अप ऑन सेपरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Separately they have written about PRI यानी फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है. Wherein federal polity, what do you mean by federalism? Power distribute हो गई है among different federal units. That is, there is a distribution of power as per constitution between center, between state and between local bodies. ठीक है? तो 3 tiers में हमारे देश में power is being distributed. The lowest tier is the local bodies, and local bodies are very, very important. Why? Because they demonstrate the essence of democracy. हम कितने democratic हैं ये depend करता है how deep democratic decentralization is happening. अगर PRIs and urban local bodies are flourishing good in any country in the world,
तो कहा जाता है कि दिस कंट्री इज ट्रूली डेमोक्रेटिक इन नेचर. ठीक है. दिस इज द रीजन एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऑन लोकल बॉडीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन सेंटर एंड स्टेट. क्योंकि सेंटर स्टेट में या सेंटर के पास पावर, ये तो एक नॉर्मल आइडिया है ही. But a beauty of a political system is when you are divesting few of the functions and powers from center and state and giving it to the people at the lowest level. Beauty तो इसमें है, काम तो आपने ये किया है असल. This is the reason local bodies become very important. ठीक है. Rights. So whenever we are dealing, rights का क्या मतलब होता है? Right means demonstrates relations between citizen and a state. राइट्स क्या है? व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर एंटाइटलमेंट. कोई आपसे पूछे राइट्स का क्या मतलब, आप कहोगे राइट मतलब मुझको क्या एंटाइटल्ड है मिलना. व्हाट आई एम एंटाइटल्ड टू गेट. सो राइट्स आर एंटाइटलमेंट. हाउ यू आर सेइंग दैट आई एम एंटाइटल्ड एंड व्हाई यू आर सेइंग? बिकॉज यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. ठीक है. So rights are entitlement enjoyed by citizen of a country, and this makes the state or that particular political system to a large extent accountable and limited also. एक responsibility आ जाती है state की कि मुझको ये rights देने हैं citizens को. So you become even more responsible. So rights are very very important aspect. Reason because as I told you, polity क्या है? Polity is an idea of conflict or cooperation or issues or collaboration involving citizen and state. तो see all these points जो अभी लिखे हैं ना, political system, ये सब state का आइडिया है. तो citizen का आइडिया क्या है? citizen का आइडिया ये है. citizen का आइडिया fundamental duties है. ठीक है. दिस इज द रीजन. तो अगर कभी देखना भी है ना कि प्रीलिम्स के लिए लास्ट मोमेंट में मैं कौन से टॉपिक्स रिवाइज करूं, सो द प्रीलिम्स नोटिफिकेशन सेज कि यही टॉपिक रिवाइज करके आ जाना. सो फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एफडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Directive principles of state policy, which ask the state that see you have to provide these rights and you have to do certain welfare things for the people. Apart from that PRIs पे question आता है. Apart from that history पे question आता है of constitution, right? अब provision पे आता है, कहूंगी तो आप कहोगे मैम फिर तो आपने सभी कुछ बोल दिया. Provisions पे भी आते हैं, but I am saying कि last moment में what points you should remember or revise. What is the nature of polity? Parliamentary form of government. Federalism पे points revise करो. What is the legislative relation? What is the financial relation? These can be some very important idea क्योंकि ये exactly prelims में लिखे हैं in the course, right? Else everything under sun is coming up because etc भी लिख दिया उन्होंने साथ में. So they are very clever. Second is current event of national importance. वैसे technically तो पूरे sentence है current event of national importance and international importance. बट वो हम तब करेंगे जब हम आईआर का ओपन सेशन लेते हैं. तो आपके लिए है सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी ऑल डोमेस्टिक इश्यूज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आई हैव फॉर यू पीपल टेकिंग फॉरवर्ड फ्यू ऑफ द डोमेस्टिक इश्यूज और मैं दिखा रही हूं कि किस तरह से उसमें प्री में क्वेश्चंस आए हैं, देखेंगे. नाउ दिस वाज द प्रीलिम्स सिलेबस. लुक इनटू द मेन सिलेबस. अब मेन सिलेबस को देखो. द फर्स्ट सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीलिम्स में भी लिखा है क्लियरली historical underpinning, so the history of formation of our constitution, evolution, features of our constitution. Features of our constitution means how our constitution could be understood for people at large. So our constitution is a written constitution. It is a mixture of rigid and flexible constitution. We are a federal polity with a unitary bias. Ours is a parliamentary form of government. We are open for amendments and changes. That makes our constitution highly a living body. These are few of the features of constitution. Single citizenship, right? Organic and unified judicial system, ये हैं features of Indian constitution. Next is amendment. As I told you,
any constitution is a living document only when you are allowing that constitution to create changes. तो amendment क्या है? Changes in the constitution. क्यों हुए हैं changes? Because there were needs or aspirations of the people with changing time. ठीक है. Next is significant provisions. So what are the important significant provisions? And then the basic structure. Basic structure मतलब बहुत simple. Constitution का basic structure क्या है? Basic structure is the basic ethos or an ideal of a constitution, which should never be changed. क्योंकि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया. सो देयर वाज दिस लैंडमार्क कोर्ट केस, आप लोगों ने सुना भी होगा, केशव नंद भारती केस, which has given forward this idea of basic structure of the constitution. Next is functions and responsibilities of union and state. तो आप समझोगे कि what is union? So what is union को समझने के लिए again, what is union legislature? What is union executive? What is union legislature? Parliament, including two houses, House of People or Lok Sabha, Council of States or Rajya Sabha. What is union executive? Prime Minister plus COM, Council of Minister. What is state legislature? State legislature again include two houses, but not in every state. So you would be having legislative assembly, and in few states you even have legislative council. What is the state executive? Again chief minister plus council of minister. Simple है ना. कोई ऐसा आइडिया नहीं है जो आपने सुना ना हो, ये मैं कह रही हूं. Polity is something which you are very familiar, बस you don't know how to structure it within the syllabus. और हमारा काम है थोड़ा सा उसको और refine और qualify कर देना. Else ideas is already there. So right from A we don't have to start. ठीक है. And challenges pertaining to federal structure. What do you mean by federal structure? कि पूरे देश में एक center है. ठीक है. The entire country there is a center of power. इसी को central कहते हैं. Right? So center of the power means all important national decisions would be taken by that center. So all important portfolios and subjects are being given to this center. इसको center और क्यों कहते हैं? Because all of us have given our vote in order to elect these people. है ना? State के में तो आप उसी जिस state में आप reside करोगे उसी के election में तो participate करोगे. But center में irrespective you are residing anywhere, all of us are taking part through voting. इसीलिए उसको सेंटर कह रहे हैं, है ना. लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो है सेंट्रल इलेक्शंस, क्योंकि ऑल ऑफ अस इररिस्पेक्टिव बिलोंगिंग टू एनी स्टेट आर पार्टिसिपेटिंग. बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में आप जिस स्टेट में आप हैं और जो आपका वोटर आईडी है उसी में आप जाके वोट करोगे. दिस इज अ डिफरेंस. तो सेंटर क्या है? मेनी स्टूडेंट हैव दिस क्वेरी, व्हाट इज दिस सेंटर? तो सेंटर एक आइडिया है, राइट. इट्स अ सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि हम सब ने उनको इलेक्ट किया है. दिस इज द रीजन दे आर टेकिंग एंड दे हैव द अथॉरिटी, लेजिटिमेसी टू टेक डिसीजंस ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स. सो दिस इज आवर फेडरल स्ट्रक्चर. देयर इज अ सेंटर, देन देयर आर स्टेट्स. स्टेट्स को भी कुछ कुछ हमने सब्जेक्ट्स दिए हैं ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, एंड देन इज द लोकल बॉडीज. ठीक है. लोकल बॉडीज आर द PRIs, और PRIs मतलब जो रूरल एरियाज में है उनको पंचायती राज कहते हैं, जो अर्बन एरियाज में है उनको म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ऑल दीज डिफरेंट आइडियाज आर देयर. सो हम ये भी पढ़ेंगे. डेवोल्यूशन ऑफ पावर मीन्स दिस ओनली, सो देयर इज नो डिफरेंस. अप टू द लोकल गवर्नमेंट, सो हम PRIs पढ़ेंगे, ULBs पढ़ेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स. देखो हर एक आइडिया आपको बताया जाएगा. सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स हाउ पावर इज बीइंग डिवाइडेड और सेपरेटेड बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और लॉ इंप्लीमेंटेशन, एंड द वर्क ऑफ जुडिशरी इज लॉ एब्जुडिकेशन. This means interpretation of the law. Also, judiciary plays a very important role in safeguarding our fundamental rights.
Also, judiciary plays a very important role in sorting out disputes between federal units. This is a larger idea of judiciary. So all these ideas we shall be discussing within these subheads. Next, comparison of Indian constitutional schemes with that of other country. अब इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम डील कर ही रहे हैं. व्हाट आर द अदर कंट्रीज जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है? So mostly question either comes making a comparison with US or making a comparison with UK. If ours is a parliamentary form of government, then US have a presidential form of government and UK have a parliamentary form of government. If ours is a federal form of government, then US have a federal form of government and UK have a unitary form of government. ठीक है? So इस तरह से we are trying to create a linkages. Next is parliament and state legislature. अब डिटेल में हम parliament क्या है? Parliament क्या है? Law making authority. लेकिन we are not restricting only to this. We will discuss the power and the privileges of the parliamentarians. और privileges पे बहुत questions आते हैं. What are the privileges of members of parliament? And why these privileges are given? Privileges इसलिए दिए हैं because we want them to create laws fearlessly. We want them to create laws without any idea that whatever they are saying or they are making during the proceedings of the house, this can land them into jail. इस काइंड का उनको कोई फियर ना हो. तो in a very independent, in a very impartial way, they are free to express themselves. Right? So इसीलिए privileges देते हैं. Question privileges पे बहुत पूछे जाते हैं. So exactly, powers and privileges are written. See, everything is written very clearly in the syllabus. Question privileges पे आता है. Issues पे भी आता है. What are the issues? Like suppose parliament is not meeting frequently, that becomes one issue. Suppose parliament is not discussing all the bills and in a very rapid way, in a hurry way, it is putting bills under vote, वो भी एक बहुत बड़ा issue है. If parliamentary standing committees में कोई bill pass नहीं हो रहा है, because there are, parliament के पास तो बड़े सारे काम हैं, and they are only meeting for 3 sessions. But bill making and law making is a continuous process. So all these MPs are involved into several parliamentary committees. और specific department से related committee हैं जिनका काम होता है कि upcoming ये bill आने वाले हैं, kindly look into that bill, kindly scrutinize the bill, कोई changes है तो बताना. So parliamentary standing committees therefore are very, very important. क्योंकि वो एक scrutiny करती हैं on the parliamentary work. But when you are bypassing this idea और जल्दी जल्दी आपने सारे बिलों को वोटिंग में डाल दिया, this means somehow you are not taking forward the exact legislative procedure which is being provided in the constitution. That is an issue. और इस पे भी बहुत questions आते हैं. What is the importance of parliamentary standing committees? ठीक है. Structure, organization and functioning of executive, इसमें क्या आता है? Powers of president, powers of prime minister. सेंटर में ये सेंटर के आइडिया हो गए. Executive at the state is what? Powers of governor, powers of CM. थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के साथ लिंक करेंगे. Right? What should governor do? What should governor not do? How government becomes and governor becomes an agent to the center of the center. So these could be few more complex questions. Okay? So this is what we actually discuss in this particular topic. Next is pressure groups, informal and formal association. So you see, since polity is not only involving state, it is also involving us. All of us are part of this political system. So जब citizen से related कोई issue आएंगे, so of course fundamental right, अच्छा features of constitution में हम fundamental rights पढ़ लेते हैं.
सो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हम वहीं पढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेट इन दिस एरिना ऑफ सिविल सोसाइटी. है कि नहीं? सिविल सोसाइटी क्या है? एनीथिंग माइनस पॉलिटिक्स इज कॉल्ड सिविल सोसाइटी. Yani when we are not directly involved into policy making, into elections, then also we are contributing since we are part of this civil society. और इस सिविल सोसाइटी में हम अपनी राय रखते हैं. जैसे फार्म एक्ट आया तो सबने अपनी राय रखी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट वी हैव अ वेरी वेरी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी में ही ग्रुप्स बन जाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस. दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स. इनका काम ही है टू क्रिएट प्रेशर ऑन द लेजिस्लेचर. इनका काम है टू वेंटिलेट व्हाट पीपल थिंक टू द लॉ मेकर्स. एंड प्रेशर ग्रुप इज अ एंटिटी विच नेवर सीक टू टेक पार्ट इन टू इलेक्शंस. सो बीइंग नॉन पॉलिटिकल, दे टेक पार्ट इन द पॉलिसी मेकिंग, not directly but indirectly. That makes pressure group very very important. तो जब हमारी बात होगी, सिविल सोसाइटी की बात होगी, तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर, फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, प्रेशर ग्रुप्स कम्स अप. ठीक है, सो प्रेशर ग्रुप पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. सी, polity is all about how government is formed, so election becomes important. What is election? Election is a kind of process which demonstrates what relation citizen has with the state in terms of government making. क्योंकि election के through ही government बनती है. So election के लिए there are various ways in which the entire process is being regulated. So we have two very important acts. इसको कहते हैं RPA 1950 and RPA 1951. As per these two acts, the entire election process is being carried forward so that there is free and impartial elections happening. RPA 1950 includes all those provisions before the actual conduction of elections. जैसे कि taking forward voters' name into the voter list, identifying new voters and deleting those who are no more, गिविंग इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी. मतलब जितनी कुछ एक्टिविटीज एक्चुअल इलेक्शन के पहले हैं, ऑल दोज आइडियाज आर बीन प्रोवाइडेड इन आरपीए 1950. All those activities which are involved after the election has happened, they are included within RPA 1951. जैसे कि disqualification of MPs and all. ठीक है? So इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 4 ऑप्शंस दे देंगे, कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर विद इन आरपीए 1950. उसमें से बड़े इजीली आप बस इस जिस्ट को देखना कि इसमें से कौन सा प्रोविजन इज बिफोर द एक्चुअल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन. तो जो इलेक्शन के पहले की एक्टिविटीज हैं वो 1950, जो इलेक्शन के बाद की एक्टिविटीज हैं वो 1951. राइट. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल के विद इन पोस्ट बनी है, दोज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि ईसी. these are few of the constitutional post. So there is a huge list of constitutional post. We will look into that. Then there are certain statutory bodies also. Statutory bodies मतलब जो act of parliament से बनी है. So we have few statutory bodies like NHRC, like National Commission for Women, like National Commission for SC, ST, OBC. ये act of parliament से बनी है. So there is another set of statutory body. We also mention some non-statutory body, which are not having any power from any act of a parliament. वो प्राइम मिनिस्टर या हेड किसी भी बिग डिग्निटरीज के ऑर्डर से बनी है. So you can take forward the idea of NDC in that regard. ठीक है. तो this is the way in which we are also trying to figure out what are the constitutional bodies, what are their function. बिल्कुल सिंपल है. कोई भी constitutional body आप पढ़ोगे, suppose EC, what are the functions पे question आएगा.
व्हाट आर द चैलेंजेस पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट कुड बी द रिफॉर्म्स. बस 3 ही एरियाज पे हम डील करेंगे. फंक्शंस, व्हाट आर द provisions of course, and what are the challenges and what can be done. So this is the entire idea regarding as far as the main syllabus of UPSC is concerned. Okay. Next very important idea is, and this is actually very important, that how to strategize the UPSC preparation for polity. क्या करें कि polity की preparation अच्छी हो. First is understanding the basic and the static portion through right content and mapping them with syllabus and PYQs. See, polity is an idea or a study which includes static topic also and dynamic topic also. Static topic है जैसे जो ज़्यादा change नहीं हो रहे हैं. Like what are the provisions written? These are few of the static areas. What are the dynamic areas? Like what judiciary is doing, judicial activism, judicial overreach, changing role of political parties, changing role or changing idea of political system. ये हैं कुछ dynamic ideas. So polity में it's a mixture of static and dynamic. तो ये approach, this makes approach bit more challenging. तो कैसे approach करोगे? First of all, we will understand what are the basic or the static portion. कैसे पता चलेगा? Syllabus देख के पता चलेगा. And as far as dynamic portion is concerned, again I have made that also. So static portion के लिए तो there are few of the text, like we can always refer to NCERT as our initial reading. तो अभी जैसे आप लोगों ने join नहीं किया है कोई course, तो start reading from today NCERT. ठीक है. NCERTs कौन सी लिखेंगे? We can start from 8th or 9th level also, but basically 9th, 10th, 8th, 11th, 12th, that becomes very important. So 8th से NCERT करेंगे हम, so that we are able to get an idea of what exactly is our constitution. And you see, ये जो NCERTs है ना, they are not exactly dealing with the provisions per se. Provisions के लिए तो specific book होंगी. When you are reading NCERT, you are getting an overall idea. And these days, UPSC के prelims में, even in prelims, conceptual questions are being asked. Like, what do you mean by limited state? What do you mean by constitutional state? तो ये किसी बेयर एक्ट में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन वाली किताब में आपको नहीं मिलेगा. वहां तो सिर्फ प्रोविजन मिलेंगे. So where would you get the basic initial concepts? Initial concepts you will develop from NCERTs. ठीक है? So NCERT reading is a must for a beginner also. Even if you are not a beginner, you have made few attempts, or फिर से you want to rewind your preparation with a new idea, start with NCERTs. Second क्या करोगे? Choosing the correct source of study, or how would you manage your resource? ज़्यादा resources के पीछे don't run. Don't run after multiple sources. That is not making any difference. All the sources, wherever you are getting guidance, everyone is saying the same thing. Constitution के beyond थोड़े कोई कुछ बता देगा. वही issue है, वही idea है. So please don't run after multiple sources. जहाँ एक जगह आपने सोच लिया है, I am going to take mentoring guidance, you stick to that source only. And once you are done with the entire thing, of the entire syllabus suppose, just you continue doing revision and consolidation. PYQ practice करोगे, लेकिन sources में multiple sources पे नहीं जाएंगे. हम specific source पकड़ के चलेंगे. So of course start with NCERTs. Then you can take forward any standard source like Lakshmikant. Lakshmikant की book में आपको सारे articles दिखेंगे. It's a very nice readable book. And you see, पहले trend ऐसा था, UPSC ने काफ़ी trend change किया. Initially, it was a very objective kind of ideas in prelims. Exact वो लोग provision पूछते थे, exact parts पूछते थे. So you can very clearly figure out जब आप इस तरह की किताब पढ़ते हैं. In between, what happened? They started asking conceptual question. This is the reason then we of course suggest student कि भाई conceptual के लिए भी तैयार रहो even in prelims. For that, this is the reason I am saying that you can hinge upon NCERTs.
But you see, trend again changed this year, 2024. Most of the 14 questions, almost all of them were highly objective. इस बार prelims का easy लगा paper polity, it was very objective. तो again हम उसी trend में आ गए हैं कि to some extent Bayer's Act, Lakshmikant and all also becomes important. I personally feel a nice gel of or mixture of both the two becomes important. क्योंकि मेंस में भी सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस लिखो, दैट इज नॉट मेकिंग अ सेंस. मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन लिख लो, दैट इज ऑल्सो नॉट मेकिंग सेंस. अ ब्यूटिफुल एमलगेमेशन इज मस्ट. तो बेसिक आइडियाज प्रोविजन के जरूरी हैं. दिस इज द रीजन आइदर यू कैन टेक फॉरवर्ड लक्ष्मीकांत और यू कैन टेक फॉरवर्ड डी बसु और यू कैन फॉर ग्रेटर एनालिसिस फॉर मेंस. ये दोनों तो प्रीलिम्स के लिए. स्पेशली फॉर मेंस यू कैन टेक फॉरवर्ड बुक बाय सुभाष कश्यप. दो बुक्स बहुत अच्छी हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर पार्लियामेंट. दिस इज बेसिकली फॉर योर एनालिसिस. ठीक है. बट यू सी ये सब यू कांट नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीलिम स्टडी एंड मेन स्टडी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी मेनी अ टाइम्स कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग अप एंड मेंस में कभी कभी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम्स अप. This is the reason, right from the beginning, take forward this approach. Apart from then, Vision IAS reading material and class handouts. So of course, if you are joining us in the class, we are going to give you class notes. Class notes dictation bhi hote hain and they are also handouts. Cling to that particular source. And have a good faith on the faculty because faculty wants you all to qualify. तो इतना faith रख के रखना कि जो पढ़ाया जा रहा है वो इसीलिए पढ़ाया है जा रहा है because that is important. And we know what is good for you, है ना? This is the reason mentors को mentors क्यों कहते हैं? Because they have a future vision. We know what can come up, we know what cannot come up. ठीक है? So have full faith in the faculty whosoever is teaching you and full faith to the institute. Class notes पे पूरी तरह rely करेंगे, handouts को देखेंगे. Apart from that, newspaper, either you can take forward Hindu or Indian Express. Continuous उसको रोज पढ़ो. अब आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स डेली. तो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को तो अपना बेस मानो. सो आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरी वर्ड न्यूज़पेपर का याद हो जाए. अनमैनेजेबल टारगेट्स डोंट सेट, बिकॉज इफ यू सेट अनमैनेजेबल टारगेट्स यू आर नॉट एबल टू अचीव, तो इट एक्चुअली फिजल आउट योर मोटिवेशन. सो मेक मैनेजेबल टारगेट. न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है? आई विल टेल यू. न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज वी वांट यू टू बी इन द लूप ऑफ द इवेंट्स. क्योंकि यू सी क्लास में जब होता है ना, तो क्लास में सिलेबस वाइज होता है कि सबसे पहले हम बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे. अब उसी बीच अगर कोई इशू आ रहा है रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ द पावर बाय द गवर्नर, जो कि आप न्यूज़पेपर में डेली पढ़ रहे हो, and if you are not reading the newspaper and you are waiting for us to come to that, तो वो तो हम काफी बाद आएंगे, तब तक तो आप लूप से बाहर हो जाओगे. So the point is, even if in the classroom the topic is not being discussed, you continue reading it. And I told you, polity ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए. It's nothing Greek and Latin. एक बार उसको पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा. And of course क्लास में तो उसको डिटेल में पढ़ाएंगे ही, but don't go out from the loop. Similar hold true for IR also. इंटरनेशनल रिलेशन में भी वेट नहीं करना है कि जब इंडिया वेस्ट एशिया आएगा तभी हम इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे. नहीं, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑनगोइंग. डेली न्यूज़पेपर में लूप में होने को उसको रीड करो. दिस इज द रीजन वी से न्यूज़पेपर बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अपने को कंटिन्यूटी में रखने के लिए काइंडली रीड एनी ऑफ द वन न्यूज़पेपर. IAS, current Vision IAS, current affair resources, we all know, and I can definitely flaunt saying कि Vision का study material is one of the best study material in the market so far. And you can definitely rely on that. ठीक है. हमारे यहाँ monthly current affairs है, so you can take forward monthly current affairs. उसका module is very simple. उसमें आपको special segments दिखेंगे, like polity के लिए important ideas क्या थे, IR के लिए क्या थे, economy के लिए क्या थे. Whatever you want to read, you can take forward. Plus, apart from monthly current affairs, we also come forward with prelims and mains 365. Wherein it's a big module in which for the last 1 year जितने important developments हैं for prelims, they are being jotted out in separate module, and important for mains, that is also being provided. So I personally say this should be your way forward for polity. इतने को ही अगर आप अच्छे से करेंगे confidently with regularity, you would be able to qualify prelims, mains, as well as you would be preparing yourself for interviews also. क्योंकि interviews में ऐसे ही questions आएंगे, है ना? So this is the way.
Next is updating the static part with current affairs. So didn't I told you that polity is one section which has both static as well as dynamic portions. So questions can come up on static जो कि easily manageable हैं क्योंकि आपने Bayer's Act या any of the constitution book पढ़ ली. But suppose in mains or even in prelims, so I have few of the prelims question in which concept-based questions are being asked directly from the newspapers. See like this, 2020 में question, which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one's choice? अब ये आपको किसी book में नहीं मिलेगा. Because in the book it's all about constitution provisions, no? These kind of nitty-gritties you are able to understand while reading newspaper because they are evolutionary idea because they are based upon judicial pronouncements, right? So you have to rely to newspapers and current affair magazines. For instance, see, this was a news which came up. Right to marry person of one's choice is an integral right to life and liberty, ये Supreme Court ने बोला है. Exactly यहीं से they have asked this question in 2020. Out of the 4 options, the correct option was this is 21. Article 21, right to life and liberty. I'll update the PPT. So this is Article 21. ठीक है, life and liberty. Next. So another question again from the newspaper. देखो कैसा question आया. So this was true and false. It was being asked. Right to privacy is intrinsic to life and liberty. This is what Supreme Court said. Question is, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and liberty. Exactly ऐसा एक question ही ले लिया इन लोगों ने. So is it true or false? This is going to be true. ठीक है, वो आते हैं ना question, this statement is true, which of the statement is correct. देखो exact newspaper से they have taken up. This shows how question comes from the current affairs directly. Therefore, newspaper reading is an indispensable part of your preparation. इसलिए मैं कह रही हूँ newspaper read करेंगे, right? Next is suppose, again, a question was being asked on payroll and, नहीं, judicial custody, payroll वाला next है, judicial custody as well as police station, right? So what is this idea? See, question आया था, inspired from current affairs only. So police versus judicial custody in the context of Riya Chakravarti case. So now note में क्या लिखा है मैंने? Actor Riya Chakravarti was remanded the judicial custody in drugs case linked with Sushant Singh Rajput's death in 2020. This prompted the question on judicial custody. तो अगर आज के बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए यू आर गेटिंग अक्रॉस टू एनी सच काइंड ऑफ आइडिया, आपको गट फीलिंग आएगी क्योंकि ये आइडिया आपको पता ही नहीं है. सो इमीडिएटली डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स, यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर. इस तरह से कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो. बाकी तो जब पॉलिटी हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही आप लोगों को, राइट? सो सी व्हाट इज द आइडिया. जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड, ये क्वेश्चन आया था. जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट and such accused is locked up in a police station, not in jail. True या false? So idea is false. Why? देखो दो आइडियाज है, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी. पुलिस कस्टडी क्या होती है कि सपोज आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई, आपको पुलिस कस्टडी में ले लिया. 24 आवर्स के भीतर भीतर यू नीड टू बी टेकन फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट and then you can be there in police custody. Police custody का मतलब you are there in the lockup. आप पुलिस स्टेशन में हो, जो लॉकअप होते हैं ना पुलिस स्टेशन के, you are there. At the maximum 15 days तक आप रहोगे, ठीक है? What do you mean by judicial custody? Judicial custody means you are under the custody of magistrate. तो अभी आप पुलिस लॉकअप में नहीं रहोगे, अब आप कहां जाओगे? आप जेल जाएंगे. मतलब so you would be putting on jail. So they would be jail, right? और इसमें 60 और 90 days का होता है heinous crime में और normal issues, उसमें depending on that 60 या 90 days is a maximum time you would be there in judicial custody. अब question फिर से पढ़ो. Judicial custody means accused in the custody of the concerned magistrate. यहाँ तक तो बिल्कुल सही है. And such person is being accused, locked up in police station. This is wrong. Police station में नहीं रहेगा. That person will be put into jail. ठीक है? और जेल पे क्यों रखा है?
बिकॉज पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ही माइट इंटरफियर इनटू माय इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बियॉन्ड द टाइम तो आप उसको पुलिस स्टेशन में रख नहीं सकते हो, है ना, और इन्वेस्टिगेशन करने में भी टाइम लगेगा। तो पुलिस कहती है कि भाई दिस पर्सन कैन इंटरफियर, सो काइंडली पुट इट अंडर मजिस्ट्रेट कंट्रोल। इसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। सो लाइक दिस क्वेश्चन कम्स अप, ठीक है, दिस इज अ रीजन न्यूज़पेपर क्लिप आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगेन, दिस इज एन आइडिया ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन पेरोल एंड फरलॉग। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it is a matter of his or her right. True है कि false? False. क्यों पता चला? Because there was a news article. The difference between parole and furlough was clearly being written in this news article. Reference क्या है? Ajay Chautala was granted furlough for 2 weeks in 2019. So the aspirant should understand the meaning of such word through newspaper. So actually parole and furlough both are ideas in which for some time you are being given a respite from the jail. आप जेल से बाहर जा सकते हैं, but there is a difference because parole is at the mercy of the jail authority, है ना, and furlough is basically considered to be somehow a right of a person who has been staying in the jail for a long time. लेकिन कोर्ट ने हाल फिलहाल में कहा है कि वो उसका लीगल राइट फिर भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट इज अ मैटर ऑफ राइट फॉर देम। सो पेरोल और फरलोग दोनों यही होते हैं। व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज दैट सम अमाउंट ऑफ रिहैबिलिटेशन, मोनोटोनी को तोड़ लो, इफ इन केस दे वांट सम काइंड ऑफ सोशल रीयूनियन विद देयर फैमिली देन ऑल्सो अलाउ, ठीक है, बट पेरोल इट कैन नॉट बी एट योर विम्स एंड फैंसीज। पेरोल के लिए जो अथॉरिटी होगी दैट विल गिव द परमिशन, ठीक है, दिस इज एन आइडिया। सो दिस इज द रीजन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव कम अप। नेक्स्ट, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ मेंस प्रीलिम्स से रिलेटेड आइडियाज देखे। सी, प्रैक्टिसिंग PYQs, लाइक अ PYQ केम अप इन 2016। कितना नॉर्मल आइडिया है जिसको यू कैन राइट ब्यूटिफुली with even your available knowledge. This is the reason I have taken up this idea. Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present situations? So with common sense also you can solve this question. In a preamble it is written, ours is a democratic, socialist, secular, republic, sovereign republic. ये लिखा है, ours is a democratic, sovereign, socialist, secular republic. यानी रिपब्लिक के ये 4 एडजेक्टिव्स हैं, बिकॉज रिपब्लिक इज समथिंग विच वी हैव स्टैब्लिश्ड। उसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ। सो आर्स इज अ रिपब्लिक दैट इज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और रिपब्लिक के कुछ एडजेक्टिव्स हैं। सो द एडजेक्टिव्स और रिपब्लिक्स आर दीस 4। क्वेश्चन कह रहा है हर एक एडजेक्टिव को डिस्कस करो, 2016 में आया, एंड ऑल्सो डिफेंड देम इन प्रेजेंट सिचुएशन. So one by one you would say what is democracy, you will define what is democracy. How would you defend? Defend matlab what are the challenges? And then still you can say no, our republic is carrying it very nicely. So don't you think what are the challenges of democracy? आपको पता है ना? थोड़े बहुत तो पता ही है क्या होगा? What are the challenges of Indian democracy? So presence of large population could be one idea. Anything else? What happens अगर democracy है तो closest idea पे जाओ, elections. Elections के समय क्या challenges आते हैं? Yes, तो आता है ना. This is the reason I say कि there are many questions in polity which you can solve out of your common sense. ठीक है? तो कई सारे ideas ऐसे हैं, like use of muscle power, use of money power, vote bank politics, communalism idea. So these are the challenges. But then you would say, no, ours is one democracy which has never witnessed something which our neighboring countries have witnessed, like Bangladesh. We have never witnessed any coup. This makes our democracy one of the greatest, manageable, largest democracy in the world. इस तरह से idea लिखे. Secularism,
सेक्युलरिज्म का आइडिया लिखो, फिर लिखो व्हाट आर द थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म, क्या है थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म, कम्युनल राइट्स आर द थ्रेट्स, बिगेटरी इज द थ्रेट. But then again, you can say that the very element of tolerance, which is part and parcel of each one of us, and even in the constitution, that actually defends or that actually safeguards a secular credential. Socialist, what are the ideas of socialism in our constitution? DPSP 39B and C, जो कहता है concentration of power, wealth नहीं हो और distribution हो. Workers के लिए कितने reforms हैं? Maternity benefits are there. All these सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हैं. बट यू कैन ऑलवेज से कि चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है. कैसे चैलेंज है? द न्यू लिबरल पॉलिसीज विच आर कमिंग अप, कॉर्पोरेटाइजेशन विच इज कमिंग अप, वो चैलेंज दे रहे हैं सोशलिज्म को. बट अगेन डिफेंड, से दैट नो, आर्स इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी भी बेसिक सेक्टर्स आर स्टिल विद इन द स्टेट सुपरविजन. दिस इज द वे यू कैन ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड योर आंसर. आर्स इज अ सॉवरेन कंट्री. क्या है सॉवरेन? पहले बताओ. व्हाट आर द चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी? लाइक फोर्सेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी, जो कि डीप इनसाइड योर सॉवरेन स्पेस आ रहे हैं. बट अगेन डिफेंस सेइंग दैट नो नो, द बेसिक आइडियाज, द बेसिक फंक्शंस आर स्टिल परफॉर्म बाय द स्टेट. So somehow we have tried to transform the nature of the state, but state continues to be important. This should be the way of writing. ठीक है? So point is that questions comes up conceptual in nature. Questions are those which can be manageable, but for that you have to be continuously in loop with the newspaper and what all is being taught in the class. ठीक है? Next is examine. ये इस साल का question है, देखो 2024. Examine the needs for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to one nation, one election. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द नीड? तो आप लोग कहोगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो राइट ऑल द एडवांटेजेस, है ना, कि एक्सचेकर के ऊपर इट एक्चुअली डज नॉट पे मच बर्डन ऑन एक्सचेकर. इट कुड ऑल्सो लीड टू अ नाइस इम्प्लीमेंटेशन आइडिया. एंड देन यू कैन इवन से नो इट हैज सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो. देन यू कैन से ऑलरेडी इनिशियली बिफोर 1968, तो हमारे जब इलेक्शंस हुए थे फ्रॉम 51-52, वी हैड दिस आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. साइमल्टेनियस इलेक्शंस चल रहे थे. सो दीज कुड बी फ्यू आइडियाज. व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? यू वुड से पीसमील रिफॉर्म्स. ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म होगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म अगर होता है. सो इट शुड बी मेड इन अ स्लो वे, स्लो एंड स्टेडी वे. सो पीसमील रिफॉर्म्स. नेक्स्ट, वेरी क्विकली वी आर summing up the session. So what needs to be done? As I told you, consolidation and revision is going to be the key. तो जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो. दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. वन सब्जेक्ट इज रीजनली प्रिपेयर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रेफर टू PYQs फॉर द ट्रेंड एनालिसिस, because we need to understand that even the examiner has the reference point in terms of PYQs only. जब कोई एग्जामिनर कोई पेपर बना रहा है तो उसके हाथ में भी PYQs ही होते हैं. This is the reason many times there are repetition of the themes though the language changes. So once you have done with one particular section, suppose आपने polity का first section complete किया, now you go for a revision and then immediately refer to PYQs both for prelims as well as for mains. ठीक है? Next, so what is going to be the trend analysis? देखो trend analysis 2017 में 29 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे थे. दिस इज बेसिकली प्रीलिम्स की एनालिसिस आई एम डूइंग. एंड 2023 में 14 एंड दिस ईयर ऑल्सो देयर वर 14 क्वेश्चंस आस्क्ड. So now 14 last for 3 years they have been 14 questions. 14 is a big amount. 14 is a very, very big deterministic amount. This is the reason polity becomes very, very important. In mains, around 10 questions out of 20 comes from polity. And 10 questions are also very important. So this makes polity extremely important both for prelims as well as for your mains. Few of the questions I have taken up which illustrates how conceptual questions are being asked. जैसे देखो, which of the following statement best reflects chief purpose of the constitution of the country? Question आया है in 2023. Options are these 4. So the correct option is going to be 3. Which of the following best reflects the chief purpose? पहला point लिखा है objective for making necessary law. ये chief purpose है? नहीं. Second, creation of political offices. Is this the chief purpose? No. To ensure social justice, social equality, social security, it is a very important purpose, but not the chief purpose.
It defines and limits the powers of the government. This is the chief purpose. क्योंकि जब पावर डिफाइन होंगी गवर्नमेंट की तभी गवर्नमेंट ये काम भी कर पाएगा. If the powers are limited, only then the government will be able to do these two functions. So we need to figure out what is the most deterministic idea. ठीक है, 4 सिमिलर आइडिया में से सबसे डिटर्मिनिस्टिक आइडिया क्या है वो हम सॉर्ट आउट करेंगे. सो it defines the limit and the powers of the government. See, second question is also a very conceptual question. 2021. Which of the following factor constitutes the best safeguard of liberty? अपने कॉमन सेंस से करो. लिबर्टी कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं? कमिटेड जुडिशरी है आइडिया, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बिल्कुल है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, नो, उससे तो लिबर्टी नहीं होगी ना. इफ पावर इज सेंट्रलाइज यू कांट हैव लिबर्टी. इलेक्टेड गवर्नमेंट, यस, गुड आइडिया. सेपरेशन ऑफ पावर. अब नाउ आर बिड इज इन A, C and D, बट वी नीड टू फिगर आउट कि डिटर्मिनिस्टिक ऑप्शन क्या है और ऐसा ऑप्शन विच इज होलिस्टिक इन नेचर. सो दिस इज गोइंग टू बी सेपरेशन ऑफ पावर, because separation of power says ki executive, legislature and judiciary, all the powers needs to be separated, and when all the powers are separated, of course it would be the best safeguard of liberty of individual. Kyun? Because every organ will keep on having a check on other organ. तो आई एम नॉट सेइंग कि ये वाले ऑप्शन सही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. खैर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कमिटेड जुडिशरी इज अ गुड आइडिया. जुडिशरी तो हमारी फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व करती है. बट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ऑल्सो गुड आइडिया, बट दे आर नॉट द होलसम आइडिया. आप होलसम आइडिया पे जाओगे, ठीक है. सो दिस हैज टू बी डी. दिस इज द वे इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो नेक्स्ट इज व्हाट आई विश यू ऑल टू डू, रेगुलर रिविजन. वंस यू आर डन विथ a few topics, regular revision and mock test. So Vision IAS has been providing few of the mock test ideas both for prelims as well as for mains. I know you all know about this Abhyas exercise both at the prelims and the mains level. So Vision IAS actually conduct Abhyas exercises both before exactly the prelims is happening and before mains also. So ये real lifetime stimulating environment में actually we provide this kind of exercise in which it appears as if you are in a real time sitting for your exam. बिल्कुल वैसा ही मॉड्यूल है, everything is same. ठीक है, ऑल इंडिया रैंक भी डिसाइडेड होती हैं and a very nice idea of feedback is being given. So Abhyas exercise is a very nice exercise. Personalized UPSC prelims preparation also you people can take forward with Sandhan. Sandhan initiative में क्या है, आप अपने custom based questions you can frame out. So it's a very personalized or a tailor made approach. ठीक है. And next is of course the All India GS test series which we conduct. So these are few of the ways in which of course we are adding to students' preparation. Last but not the least, managing stress and remaining motivated. This is going to be the basic key idea. क्योंकि अगर stress लेके करोगे तो जितना मैंने अभी आपको बताया, nothing would be there in your head. So right from today, if you are making your mind that you would be preparing, first thing would be you accept this preparation is going to be strenuous. Accept करो इसको. Accept that I am going to take a very, very nice challenge. Also give a huge applaud to yourself because within yourself your consciousness is saying that मैं कुछ easy option पे भी जा सकता था but I have chosen this difficult path. ठीक है, but as we say no, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वही तो महान है. So it's your test. Until and unless you are in this challenging situation, आप खुद को टेस्ट नहीं कर पाओगे कि what is my strength. Easy path तो everyone takes. Let's take a difficult path. And difficult path is difficult because the end results would also be difficult. The post would be very challenging. And that will add gravity to your personality. That will make you different from the crowd. Entire idea ही life change हो जाएगी बिल्कुल. It's a U-turn in your life. But उसके लिए be prepared to face challenges. And also prepare yourself कि जो भी challenge होंगे with good mind, fully motivated, I will face it. ठीक है? Because this is an idea of grooming myself.
है ना? और जितना ज़्यादा challenges मिलते हैं उतना ज़्यादा इंसान की personality groom होती है, right? So you need to be very motivated throughout. Stress बिल्कुल नहीं लेंगे, आएगा. I am not saying कि stress will not come. बट आप ही को मैनेज करना है. इट कांट बी इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड. de-stress इज समथिंग विच कैन नॉट बी इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड. अंदर से यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि स्ट्रेस है, बट अभी स्ट्रेस के विद इन मैं कैसे अपने को मैन्यूवर करूं, राइट? एंड वॉट आई वॉन्ट डू सुनना ही नहीं है. आई विल डू दिस शुड बी योर आइडिया. यस आई कैन डू. क्यों नहीं करेंगे भाई? जो टॉपर्स जो निकल रहे हैं, दे आर ऑल्सो लाइक यू पीपल ओनली. वो भी तो निकल ही रहे हैं. वो भी कभी ऐसे ही ओपन सेशंस में बैठे और उसके बाद दे आर बीन फेलिसिटेटेड हेयर एट द पोडियम. सो यहां से यहां तक की जर्नी इज मैनेजेबल. स्टूडेंट्स आर डूइंग इट, सो व्हाई कांट यू पीपल डू? ठीक है? तो वंस यू हैव डिसाइडेड, अब हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है. स्ट्रेस आएगा तो वी विल ट्राई टू रिलीव. कैसे रिलीव करोगे? देखो बड़ी सिंपल है. अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे दिन भर में. फॉर व्हाट? For good physical exercise. You go for walk, you go for some yoga exercise, you do meditation, but invest on yourself. Eat good, read good, communicate with those people who motivate you. इस तरह से physical and mental बिल्कुल आपका stress level maintained रहेगा. नहीं मैनेजेबल रहेगा, है ना? फिजिकल स्ट्रेस भी आएंगे, जैसे अभी क्लासेस शुरू होंगे, बैक टू बैक क्लासेस भी होते हैं. अभी उसी बीच में यू मैनेज एंड टेक टाइम फॉर टेकिंग योर लंच ऑल्सो. डोंट स्किप योर मील्स. मील स्किप कर दोगे तो फूड कैसे? फूड इज द फ्यूल टू द बॉडी एंड टू योर माइंड. तो नेक्स्ट 3 घंटे के लिए हाउ वुड यू प्रिपेयर योर सेल्फ? नहीं, मैं उस बीच में अपने मील्स भी लूंगा. ठीक है? सो ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, है ना? ऐसा फूड खाओ जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहे. एंड बी इन अ वेरी नाइस कंपनी जो आपको मोटिवेटेड रखे. सो अपना अच्छा सा एक ग्रुप बनाओ. ट्राई टू एक्सचेंज योर थॉट. सो आई एम श्योर विद दिस यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू राइज. सो डियर स्टूडेंट, गो फोर्थ, अचीव योर ड्रीम्स and shine bright in all you do. So all the very best from my side. I'm sure all of you would be joining us and we'll be meeting soon with any of these kind of discussions regarding these papers. Thank you so much for coming up for the open session in Vision IAS, and we welcome you all very soon in our family. Okay? Thank you so much.